welcome back to my channel. For those of you who don't know me, who are new subscribers, this is Naaz Arora. I'm a fashion blogger and a makeup artist. I thought of doing a haul video today, and the next one is a makeup video. So don't forget to subscribe, like, comment, share this video so that I keep posting content that gives me a real good boost. So अभी festive season again आने वाला है, like Christmas, New Year's. So I feel holiday season is there, and I need to have a lot of shimmery stuff because I feel festivities are all about a little glitter and glam. So yeah, and apart from that, I have shopped some winter wear. ये तो जो मैंने डाला है वो सब Zara से है, all three things. But मैंने haul जो है वो मेरा H&M का है. I loved H&M's collection for the first time. The one which came to Chandigarh, I mean the Chandigarh store. Otherwise मुझे H&M कभी भी इतना पसंद नहीं आया है. I'm one of the biggest Zara fans ever. Like I've told you, all three things that I'm wearing are from Zara. So abhi H&M has won my heart with their winter collection. The festive collection is really good. The festive edit that they've done with all the actors, it's outstanding. Then the winter wear collection is really good. Their semi-formal formals are really good. So without wasting any time, let's just dive straight into this video. Guys, ये एक try on haul होने वाला है. I am going to show you or insert images of everything. So this is the first thing that I've got. It's this beautifully U-cut top from the bottom and a square neck, which is full sleeve in satin material. This is a little corset like. मेरे Instagram page जिस दिन मैंने इस top में photo डाली थी, I was flooded with DMs that where have you got it from? And it is so worth it. इतना pretty है. मैंने इसको Indian wear के साथ भी डाला as a blouse and it looked stunning. This is for $12.99 and it is totally worth it. But मुझे कभी 99 का लॉजिक नहीं समझ आया. You can always quote it as 1300. 1 रुपया में कुछ नहीं मिलता. So leaving that aside, it is so pretty. So this is a cream color top, not exactly white, and it is so beautiful. मेरे को इसकी corset detailing बहुत पसंद है. मैंने इसमें same velvet में black मंगवाया हुआ है, वो अभी नहीं आया, so I'm not showing it, but the cost for that is same and it is similarly made. Like the cut from the bottom is the same, like the U-shaped cut. So yeah, this is my first pick. So guys, ये तो मैंने L में pick कर लिया, but L वाला थोड़ा सा मुझे loose है. I wanted something which was more fitted. So मैंने जो velvet में black मंगवाया है इसके साथ का, वो मैंने medium size में मंगवाया है. So if you are my size, go for a medium. Guys, next is this black bandeau jumpsuit from H&M. It's for 3,999. इस पे सिर्फ यही 3 detailing वाले buttons हैं. They're very pretty. And it's like a jumpsuit and with straight fit, obviously trousers. Back पे इसकी zipper है. So it is like, because it's a full piece, like head to toe, so you don't really need something else. तो मुझे लगा ये 3,000 का worth it है. और winters में आप इसको pullover के साथ स्टाइल कर सकते हो. जैसे मैंने ये डाला है, तो मैं ट्यूब है ये, तो मैं इसके ऊपर ये डाल सकती हूँ. यहाँ मैं प्रॉपर नीचे हाई नेक डाल के उसके ऊपर डाल सकती हूँ. वाइट शर्ट के ऊपर डाल सकती हूँ. सो ये बहुत ही वर्सेटाइल है. आई विल बी स्टाइलिंग इट सून ऑन माई Instagram, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर. इट्स naaz.arora and for my makeup handle, it's makeup by Naaz Arora. Guys, next भी आप मेरे Instagram पे देख चुके हो. It is this beautiful water painted kind of top with these balloon sleeves जो यहाँ तक आती हैं elbow तक, and इसके back पे stretch है, which is something I really like. And ये बहुत ही pretty लगता है, बहुत ही ज़्यादा pretty coordinate है ये. And इसके साथ ये प्लाजो pants है bottom में, so which again has this stretchy detail. इसमें these plazo pants are for 2,299 and I am the size UK 8, and for the upper I am in the size UK 12 and it is for 1,999. But the entire cord was looking so good on me that I couldn't resist buying it. Plus मेरे बहुत सारे friends की weddings अभी चल रही हैं, आ रही हैं, तो आई थॉट उनकी किसी छोटे मोटे घर वाले फंक्शन पे आई विल वेयर इट, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ सेमी इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ एन आउटफिट, नॉट एग्जैक्टली वेस्टर्न ऑल्सो.
बहुत अच्छे से मैंने इसको इंडियन ज्वेलरी के साथ स्टाइल करना है, तो दैट इज वाई इट विल गिव दैट इंडो वेस्टर्न फील, नॉट 100% वेस्टर्न. सो आई थॉट इट्स अ गुड पिक. रादर देन मैं कपड़ा लेके बनवाऊंगी, उससे बेटर है मेरे पास ये ऑप्शन है. सो आई कैन ऑलवेज स्टाइल दिस अप और डाउन. एंड द बेस्ट थिंग इज इट्स अ कोऑर्डिनेट, तो मैं इसके इंडिविजुअल पीसेस भी कभी भी कैसे भी स्टाइल कर सकती. आई एम अ बिग फैन ऑफ H&M's एथलेटिक वेयर. सो मैंने उनसे एक ये आउटडोर पैडेड जैकेट लिया है विच इज़ अगेन अमेजिंग. इस पे ये स्लीव डिटेलिंग है एंड देन बैक से जो मटेरियल है वो सेम है. पफी जैकेट है थोड़ी सी. एंड दिस इज़ फॉर 3,299. सो या आई एंड H&M की जैकेट्स मैंने पहले भी ली हुई हैं. इनकी जैकेट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा. एंड अगर आप इसके नीचे कुछ नहीं भी डालोगे, यू विल नॉट फील कोल्ड इन अ सिटी लाइक चंडीगढ़. इफ यू आर लिविंग, यू विल फील वेरी वेरी ओके. लाइक हाँ, इफ यू फील एक्सेसिव कोल्ड ऑलरेडी इन अ सिटी लाइक आर्स, देन यू कैन प्रॉब्ली लेयर इट अप. बट मेरे जैसे बंदे के लिए ये सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब मुझे इसके नीचे ना कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो दैट इज़ वाई आई वुड इन्वेस्ट इन वन पीस, बिकॉज आई डोंट लाइक लेयरिंग अप अ लॉट. So I prefer always investing in pieces which I can wear by themselves as well in winters, because मेरे को suffocation होती है. I feel claustrophobic in a lot of layering, so that is why I feel this is a good pick. Guys, next is this beautiful dark brown LBD. I know it looks black, but it's dark brown in color from the naked eye, and this one was for 1,499, which is 1,500 bucks, and it's a short dress. I feel इसका मुझे again I love the corset design. That is the reason कि मैंने ये लिया है. अदरवाइज मेरे पास कोई रीज़न नहीं था. वाइट सैटिन में पिक करने के बाद मैं ड्रेस भी सिमिलर पैटर्न में पिक करूँ, बट देन माई पेरेंट्स फेल्ट कि ये मेरे पे बहुत अच्छी लग रही है, सो आई शुड बाय इट. तो ये मैंने उनके कहने पे ली है. थैंक यू मम्मा पापा, आपने मेरे पैसे और खर्च करवा दिए. मुझे पता नहीं मैं ब्लैबर क्यों कर रही हूँ इस टाइम पे. मेरा जो सारा वार्डरोब था वो न्यूट्रल शेड्स में हो रहा था, तो मैंने सोचा आई विल पिक अप दिस पिंक क्रॉप टॉप जस्ट टू ऐड अ पॉप ऑफ कलर टू माय विंटर कलेक्शन. एंड इसमें एक स्ट्रेची सी बैक है, एंड ये मैंने अभी डाला नहीं है, बट इट्स फॉर 1,499. एंड इसको आप थोड़ा सा ऑफ, बिकॉज देयर इज इलास्टिक हियर, यू कैन ट्राई वेयर इट एज एन ऑफ शोल्डर और यू कैन वेयर इट लाइक दैट. एंड यहाँ पे भी स्ट्रेच है, तो बलून स्लीव्स हैं ऊपर से और नीचे से स्ट्रेची लाइक you know body con like है. So I love how simple yet stylish it is. Plus I love the ruched detail over here, so I felt it again was a very good pick. Guys, next मैंने लिया है ये जिम वेयर अगेन, जिसकी बैक थोड़ी सी सेंटर में कट है. इट्स अ क्रॉप टॉप कम पैडेड ब्रा. सो मुझे इसके नीचे पैडेड ब्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट ऑलरेडी हैज़ दीज अमेजिंग थिन पैडेड बॉटम. इसके अंदर द डिज़ाइनिंग इज सुपर गुड, लाइक आई कैन वेयर इट अप और डाउन. एंड दिस अगेन कॉस्टेड मी फॉर 1,500 bucks. इट्स इन द साइज मीडियम एंड आई फेल्ट इट लुक्ड रियली गुड इन मी. मैंने इसके साथ एक मैचिंग बॉटम लिया है विच आई शुड शो यू गाइज, which is this. And this is what it looks like from the bottom, and upper is plain. So this was for 1,999, which basically 2,000 bucks, and this is in the size small. So yeah, my bottom is smaller than my upper body. So yeah, that's the complete set which I took, and that's it for my H&M haul. I know I shopped like crazy, but then अभी तो आई शॉप्ड इवन अ ड्रेस फॉर माई सिस्टर, बट उसका बर्थडे था, सो आई ऑलरेडी गिव इट टू हर बिफोर हैंड, क्योंकि उसने डालनी थी. बट इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी ड्रेस. आई ट्राई एंड इंसर्ट अ पिक्चर हियर. इट्स फॉर 3,000 bucks. इट्स वेरी ब्यूटिफुल गोल्डन शिमरी ड्रेस. मैं उसकी पिक्चर इंसर्ट करूँगी एंड आई विल कीप ऑल द लिंक्स ऑफ दीज क्लोथिंग in the description bar below, so that if any of you wants to shop, you have a direct link to the website. And they are not paying me for this. I have shopped this myself because I was lacking a lot of winter wear. मेरे पास genuinely सर्दियों के मैं कपड़े नहीं लेती, कभी भी नहीं लेती. So मैं हमेशा अपनी मम्मा की जैकेट मार लेती हूँ. वो बेचारे मेरी इन हैबिट से बड़े परेशान है. सॉरी आप लोगों को इतनी स्टोरीज बता रही हूँ, बट देन शी वॉज लाइक प्लीज गेट योर ओन स्टफ. मैं हमेशा परेशान होती हूँ. सो इस बार मैंने बोला चलो खर्च लो, पैसे ले लो, कोई बात नहीं. पेरेंट्स ने
क्या मतलब उनको तंग कर रहा. So I bought it and I thought of doing a haul for you guys. I hope you enjoyed it. Please, 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 if you like such videos, my haul videos or any other videos, please don't forget to hit that like button, comment down below, share this video with your friends, and subscribe, subscribe, subscribe. Mwah. Much love. Thank you for watching. Bye bye. See you soon.